बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। न देखोगी फिर तुम कभी आईना हमारा। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ।
If you want to do well with women, you are going to have to understand it as an art. You don't need to be fake, but you do need to be strategic. Every move or non-move that you make makes you more or less desirable. And if you're naive to that, you're not going to get anywhere. If, on the other hand, you come to understand women generally and how to be both artful and genuine in seduction. वज़ा हम आ गए हैं, हम अब पूरा लाइव करेंगे स्कल्पटिंग के ऊपर. यस, लेट्स गो. लेट नाइट ही रहेगा ऑलमोस्ट. ओके फाइन. हमारा रेफरेंस लो होल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. ओके, स्ट्रेंथ करते 3. पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे हम थोड़ी देर में. डन. ओके. फाइन. हमको इतना बड़ा चाहिए ना.
pretty fine. मिलाना नहीं है यहाँ पे इसको. Totally fine.
भाई क्या बनाया है भाई, मज़ेदार। क्या रेफरेंस है भाई, मज़ेदार भाई। बट गलतियाँ हैं इस पे। सी, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, कितना वो ऐसा है, वो करना पड़ेगा डिटेलिंग में वो।
मैंने ठीक करने की जगह खराब कर दिया है इसको. आई विल से यस.
seduction, you've got a shot. To help in this effort, I'm joined by best-selling author Robert Greene. What should men learn from the fact that women fantasize about vampires and billionaires? Seduction involves the desire to lose control. And men share this as well, which is why men are often attracted to women who are slightly dangerous, women who are either a little bit crazy or women who have this incredible sexual energy that can almost dominate a man. So seduction involves crossing up closely to that border of something that's dangerous, where you might be overwhelmed, particularly in our world today, where things are getting more and more Puritan and people are more constrained by political correctness and all these tenets that we're supposed to adhere to, that we lead rather dull, constricted lives. We're not playful enough. Things are too ordered and conventional and regimented in our world. But secretly, we want to get out of that. Secretly, we are drawn in our world today, dangerous, to what we can't really. Come on. To what we can't really. Come on. Control. Seduction is a sense of I'm letting go a little bit. I'm entering a world where the other person is leading me through an adventure, and that's the excitement. That's the kind of transgressive element. A dangerous person is always going to have that. A vampire I can understand. Billionaire is a different thing. I mean, billionaire has to do with security and comfort and money and the sense of a man who's made it, who he must have some quality that got him into that position kind of thing. The fantasy of you can have any kind of object that you desire, like in a fairy tale, because this man has billions of dollars, so he can afford whatever you want. I prefer, when I'm thinking about seduction, to deal with kind of real life situation scenarios. I understand romantic fiction, but romantic fiction isn't what aren't characters in real life that we're going to be encountering. So it's a little bit distanced from me. It's interesting. The way I look at that, and the reason I found the book A Billion Wicked Thoughts so intriguing, is I think it is absolutely revelatory what men and women spend their time fantasizing about. It certainly gives you a sense of the underlying algorithm that's running in all of our brains. The fact that male pornography and male pornographic searches are all around like body parts and things like, it's basically just body parts. That really, there's not even an and there. It's just, that's what male searches are all about. They're describing the thing they want to see. So it's all like hyper visual. Whereas the fact that women are into a totally different kind of erotic stimulation, to me, that alone was already revelatory, that they like story-based, like they want to read, that their porn is read. Because what I'm hoping guys will get out of this episode is an understanding that there is an art to seduction. You're not being fake by acknowledging that. And the reason I wanted to start with where people's fantasies lie is because if you understand that, you understand the algorithm that you're trying to trip into. Now, of course, you're going to do it in a way that's far more real and grounded. I'm not saying to act like a vampire, but to just address your work as it relates to both the vampire and the billionaire, at least as I read it, is you talk a lot about there is a type, and I forget which name it is for the type of seduction archetype, but where they're playing with androgyny. And the dandy. The dandy. Okay, so the dandy blends the two. So there's a familiarity for the woman of I think of vampires as being somewhat androgynous. Definitely. They are usually ultra refined. There's an aristocratic air to them. Yeah. And so you have the dandy portrayal in that, mixing the androgyny, but then you need like you talk a lot about Errol Flynn, who had flashes of danger. And so to me, that's the vampire. The vampire is obviously in the extreme, obviously in the abstract, it's fiction, but it really does hint at something real. And so getting people to understand this is the algorithm that's running in a woman's brain, that it is very different than the algorithm that's running in the male brain. And so your job is going to be, if you're going to seduce somebody, again, this is me quoting you
You have to be them focused and not you focused. Yeah, but then, it's what's a little bit tricky here is you have to think that each woman has their own separate fantasy. So first of all, it's a particular type of woman that's reading romantic fiction. Not all women are reading that kind of thing. But each person that you deal with has their own particular fantasies, right? And you want to be very sensitive to that. So if you come at this with this idea that women have these preset kind of ideals, then you're already in trouble, because you want, as far as being you oriented, you want to drop everything and you want to enter their world and look at the signs that they're giving out as to what their fantasies are. If they happen to be reading that kind of fiction and they happen to be reading those kinds of stories, then great, a little red light goes on in your head. But you want to be looking at all the other signs that they're giving out as well, the movies that they watch, the music that they listen to, the clothes that they wear. If a woman seems to be particularly repressed, that's a sign that they're going to be attracted to that danger element, right? So you want to be paying deep attention to the individual. This is a problem that men have in general that they need to address. They're thinking in generic terms. They're thinking that they don't individualize the woman. And the worst thing you can do in seduction is to give the other person the idea that you are coming at them and thinking of somebody else. You're thinking in terms of stereotypes. You're thinking in terms of your previous girlfriends. You're not looking at them as an individual, the kinds of things that they love, the kinds of things that you can provide them that they're missing in life. So the game is the most important game, as opposed to just thinking in terms of these categories, is dropping all of that stuff in your head and just looking at the woman and entering her world and seeing it for what it is. That's half the game of seduction. Because if they feel that you are individualizing your attention, that is absolutely the key to any kind of seduction, because we don't get any kind of individualized attention in this world. We're hungry for it, and particularly women coming from men, because men don't seem to understand the fantasy element. As you say, a fantasy is kind of a story. It's like a drama. It's going, and so when you're seducing someone, it's a story that you're bringing them into. You're creating theater. You're creating drama. You're leading them into this world just like an author will lead a reader through a series of steps, right? But you have to be very focused on them and who they are in particular. And seduction involves a sense of vulnerability, right? A sense of openness, where you're letting the other person come into you. And the word vulnerable comes from the Latin meaning wound. So vulnerable means the willingness to be wounded, right? And the archetypal image of love and seduction was Cupid with an arrow and hitting you with an arrow and wounding you with love and creating blood from it. It's like there's pain involved because you're opening yourself to another person. You're willing for them to hurt you, and you know that you could be hurt. And so the origin of seduction actually comes from our relationship to our parents. And oftentimes for a man or a woman, Jung talked about this in terms of an animus and an anima. And speaking as a man, anima figures are those kind of women that inhabit your dreams. And I have dreams all the time of that kind of anima woman. And it's usually a certain type, a certain look, certain kind of feel to it, okay? And that anima figure for the man comes mostly from these earliest relationships in childhood, like the mother figure. Generally, it could be a sibling. And when you're a boy and you're facing your mother, you're completely vulnerable, you're weak, you're dependent. And that sense of being dependent is a source of a lot of your erotic tension, but also a lot of your fears, because men are afraid of letting go, afraid of being dependent, afraid of being overwhelmed, right? So you carry within you these images of the anima and the animus. You're vulnerable in those moments, right? But what happens to you as you get older is you try and make yourself invulnerable, because life is hard, it's harsh. People are coming at you with a million different things. You retreat into yourself, into your ego, into your little castle. You build walls around yourself. And you're afraid of letting someone in. You're afraid of letting go. You're afraid of losing your defenses. And in the 2023, it's worse than ever before, because the world is very, very intrusive. People secretly want to be vulnerable. I just wrote a chapter about this in my Sublime book.
in relation to the idea of love. People want to feel vulnerable. They're just afraid. And so it's, I think, very psychologically important for people today, particularly for young people, to be willing to be vulnerable and to experience what that's like, to experience letting go of your defenses. If you're hurt, how do you deal with that? Because inevitably you're going to be hurt. That builds life skills, that builds toughness, that builds a kind of thickness in you where you can endure being hurt, because life involves in all sorts of hurts, and you're able to function with it and actually invite it in. It's almost good sometimes to invite a little bit of pain in your life. When you want to get physically well and you want to exercise, you realize that getting well involves pain, it involves repetitions, it involves running so far that it hurts a little bit, right? So you want to be able to welcome a little bit of that pain. So I think where we are in our culture right now, seduction is incredibly important. And I must say that on all of my social media, when I do a little video about seduction, I get the most views of all. And the irony is that more than ever, that word seduction has like an element of, ew, I don't like that. I don't want to be seduced. Oh, what an ugly book. Oh, Robert's really evil. But secretly, people are yearning to be seduced. So that's my answer to your question. It's a great answer. So now the thing I want to know is, all right, vulnerability is about a wound, opening ourselves up to being wounded. In going through that process, we learn a lot about ourselves and how to be, in some sort of ironic sense, by being vulnerable, you're able to develop strength and a willingness to expose yourself like that. Why are people so hungry for it now? Why, as we get more puritanical, as we have to worry about political correctness, why is it that the desire to let go becomes a thing that we're crying out for? Well, people are generally ambivalent. I try and make a case when I talk to people that your emotions are never singular. They're never one thing. We're constant. We have many moods. Our emotions are continually passing like clouds in the sky. They're never set or fixed, right? So, as Jung points out, and a lot of other psychologists, when you have a strong quality, let's say a man who's hyper masculine, who's so tough and rugged, you can bet that underneath it is an insecurity, is a feminine streak that he is afraid of revealing. So when people reveal a strong quality, such as defensiveness, such as resistance, such as puritanical things, such as virtue signaling, such as I'm the saint and everybody else is evil, you can bet that lurking underneath is a deep, deep insecurity of, I'm actually the opposite. I'm hiding the opposite. And the sense of being inauthentic, of repressing a part of ourself, is very painful. That secret self, I call it the lost self, it wants to come out. It wants to play. It wants to be like that child and go out and play and be in the world. And so when somebody enters your life who touches upon that, who has a little bit of that dark energy, and you fall for it, it's because you've been repressing it, and it's secretly what you want, very much so. I think people secretly want to be seduced now. And I see signs of it in our culture. I've seen signs of it in politics. You find a what's the word? Like a charismatic politician. There's a word I can't seem to. My mind is a little bit slow today. That has this sort of strong quality. Like a demagogue? Demagogue. Thank you. God, you have to be my brain today, because sometimes it's like not clicking there. So the demagogue, we're attracted to the demagogue because secretly we want that kind of power. We want that dark side to come out and to play. It's all through our culture. Entertainment is reeking with this stuff. You know, you have in movies, if you want to talk about vampires and going back to your vampire thing, all of the evil characters, the seducers. Yes, in the movie we may moralize them. We may say they're awful, they're horrible, we hate them. But boy, all of our attention is drawn immediately to those dark, evil characters, to those seducers, to those people who have that dark energy. People are dying for it. You know, it's been repressed, and it's what I wrote about in Human Nature, about the dark side, our shadow that we're trying to repress. Is seduction necessarily a dark energy? It has to involve some kind of sense of danger, of something that's a little bit naughty.
So if I want to pick up a woman and I go to a bar, just throwing out a scenario here, and it's so easy. I don't even have to buy her a drink. She follows me. Oh, yes, of course, Robert, I'll go home with you. Yes, yes, you're so attractive, blah, blah, blah. There's no interest there. There's no excitement. There's no spark. But a bit of resistance, a bit of, I'm not so interested. Oh, I already have a boyfriend, blah, blah, blah. Whoa, my interest is going like that. So we are by nature attracted to what we cannot have. And I explain why that is so in the Laws of Human Nature on a chapter on the nature of our desire. Things that we can have or that we don't have excite our desire more than anything else. So a sense of resistance, a sense that we're not supposed to have this person or that they're not supposed to have us is exactly what entices us into it. So if there's no element of naughtiness, if there's no element of a slight taboo or transgressive nature, it's not going to get our juices going, our erotic, our fantasy juices and all that other stuff. Like my wife and I are very much in another era. My opening line to my wife was, "You're not going anywhere, sit your ass down." And when I said that, I was her teacher, school for adults. I always feel important to say that. But yeah, I was her teacher, Okay, and my right. opening line was playfully aggressive, but aggressive. And our courtship was very much like textbook seduction. And it was awesome and amazing, and also now so high risk that I don't know that I would have made that move now. And so, look, to your point, maybe over enough time this plays out that people push back against it. And Well, they already are. but what do you say to people in this moment? Well, yeah, there are boundaries you have to respect, and it is a cultural moment. And first of all, there is nothing in the art of seduction that ever even comes close to advocating violence or rape or forcing yourself or coercion. Yes, some of it's psychological, and I know it kind of teeters on that boundary where you're psychologically manipulating someone to a degree, but there's never any element of physical force, right? So I understand. Personally, I don't think that that is seductive to be forcing yourself on it, to be that overpowering. I think is not seductive, because seduction is inviting the other person in. It's a gentleness that brings them in. Later on, the powerful stuff can come in, but you have to be able to see those codes and respect them. So there's nothing in the art of seduction that would ever violate that code, I think. So I know there's a chapter in the strategy part, the second half of the book, that people point out as kind of evil, and I admit it's a little bit teetering towards that, which is about isolating the other person. So you kind of take them to a place where their family and their friends, there's nobody around, they don't have anybody else but you, right? And it could be an island, it could be a place, or it can be just literally where you get them away from their familiar surroundings. And when they're in unfamiliar territory, they become much more vulnerable. Now, I understand there's an element, you would never, ever start out a seduction with that strategy. I have those in order. It's like strategy number 17 of 24. It's towards the end. It's towards when you've gotten them, you've cast a spell and they're hooked a little bit okay? So in the beginning, you're respecting all of that. But as long as there's never any taint of force, of coercion, because that's what the Me Too movement was about, because men were exploiting, and in a bad way and not in a seductive way, were using their positions of power to get women to do sexual favors or to harass them in some way. There's nothing seductive about that. There's nothing in my book about that. So if you're reading the book, you don't have to be afraid of violating any of Me Too tenets. In fact, the opposite, because the 5th chapter or so is Enter Their Spirit. It's all about being incredibly receptive to who they are as an individual, right? And knowing how to give the right gifts and how to see them for who they are, et cetera, et cetera, et cetera. So it's the reputation of seduction that some people are like think, oh, I don't want anything to do with that. In fact, my book is banned in Germany. They pulled it off the shelf. German people are writing to me all the time, how can I get a copy of your book? Specifically the art of seduction. Yes.
Interesting. Do you have any sense of why? What was it banned for? Feminists in Germany were protesting it. Feminists in France were protesting it. And I wrote a letter to my French publisher explaining why that's ridiculous. They published it, and the whole furor died down because it is ridiculous. Did they say why? Like, Well, they found it psychologically manipulative. So a man who is like that, who there's another word I'm missing, but who could be like that. This is a book that could help him figure out the various tactics for misleading a woman and leading her into, like grooming her for some kind of relationship she's going to regret. First of all, that makes women seem like these weak little fragile little dolls from the 19th century that need all of this protection from the evil man. But in fact, if my book explains to you how a seducer works, and it gives you the knowledge for how to resist him, how to recognize somebody who may be using some of these tactics in a way that's going to be dangerous for you. And I've had women write to me and tell me that the book has helped them immensely in understanding that. Then I'm not weak. I can figure out, I can identify a seducer, et cetera, et cetera. I can protect myself. I have the inner strength to be able to do that. So I think the book kind of fed into this idea that I was giving instruction. But half the book is about women seducing men, which is the absurdity. I have gay seductions. I have a transgender seduction. It's not a book about men seducing women with their dark energy. It's about seduction in general, the whole psychological process. It's part of our culture where we're infantilizing people, where we don't think that they're adults. And I assume that my readers are adults, that they can use the book for whatever purpose it can. And a lot of it is to give them knowledge that will help them defend themselves against people who have bad intentions. Yeah, I also think it's important for people to understand the way the world works. And the reality is, while a lot of the human animal makes us uncomfortable, the human animal is what the human animal is. And while anybody listening, I will tell you, it will blow your hair back, but I highly encourage people to read A Billion Wicked Thoughts. It is what people search for when they're searching for pornography is hair-raising. It is really pretty eye-opening. It is shocking. And that's just who we are. So under the hood is a monkey brain that is worrying and has had, millions of years of evolution. And we think that we've escaped all that, but we haven't. So, and I'll contextualize my own thoughts on this subject by saying I used to be the nice guy. And I'm very curious to know if you think nice guys finish last. I will say they do. I certainly did when I was using the tactics of a nice guy. Now, nice guy carries weird connotations today, probably rightly so, in that quote unquote nice guys, I think, are powerless. They don't understand the game. You actually had a quote. I can get really close if I have to paraphrase, but the idea being that powerlessness corrupts more than power. Yeah, it's a quote of Malcolm X, actually. Okay. Tell me more. Well, so we all desire a degree of power and control in life. And you have to understand the word power is not just like about politics or about Elon Musk or anything. I'm talking about in our day-to-day lives, right? How we interact with people. The sense that I cannot influence my boss, my colleagues, my wife, my children, the people around me, is deeply, deeply miserable for us, right? It makes us feel powerless. And when we're powerless, we turn in on ourselves, we end up hating ourselves, and we get depressed, or we become passive aggressive and we start manipulating other people in ways in which we can justify to ourselves as, oh no, I'm not really doing that. I'm actually a good person. But it actually can be very, very harmful. So you have to admit that you want a degree of power. You want the ability to influence people, and you're not going to be hypocritical. You're going to be honest with yourself,
How often are you checking your credit score, afraid of identity theft or account breaches? We all use the internet every single day for important things like personal banking and remote work, so why not protect yourself with our sponsor, Aura? Aura is an all-in-one cybersecurity service that keeps you safe online. Aura identifies data brokers exposing your info and submits opt-out requests on your behalf. Aura also monitors your credit, tracks your passwords for data breaches, and secures your online activity with VPN and anti-malware protection. You can try Aura for free for 2 weeks by clicking the link in the description or scanning the QR code. Niceness is okay, is a good quality if it's under control, if you understand it and if you use it and you know how to use it strategically, and maybe it's a part of your personality and it's authentic, but it doesn't govern you. You are in control of it. And what happens is if you're the pleasing type, which is your whole strategy in life is pleasing other people, getting them to like you, which is, a quality that a lot of people have, men and women, right? It doesn't come from a place of security. It comes from a place of deep, deep insecurity. You don't understand really who you are. And so you can't control it. And so you're always trying to please people. And when we can sense, we can smell people's insecurities. And when it comes to like seduction between men and women have a sixth sense of they can smell an insecure man, right? And they can smell it in you. And they can smell it in all kinds of ways. And trying so hard to please and trying so hard to be nice secretly indicates that you're actually very weak inside and is very much a turnoff, is very anti-seductive. And so you want to be nice, but you want to be strategic about it. You want to know, sometimes I don't want to be nice. Sometimes I want to create boundaries. Sometimes I want to pull back. I want to play the coquette. I want the woman to know she can't take me for granted, right? I'm not interested in her. The moment you show her that you're not interested in her, she's going to be much more interested in you. You're willing to play a little bit that tough part of it. You're in control. You're strategic. You know when to use absence and when to use presence, when to text them and call them, and when to disappear for a week or so and make them feel like they don't, they can't take you for granted. So know when to be nice, and you can use it to effect, but you also know when I don't want to be nice in this world. And that pertains to all sorts of situations in negotiation, etc. If you're always so nice in business, you're going to be you're not going to survive very long. I come at this from a evolutionary perspective. Yeah. And so the reason, because I was so bad with women for so long and then figured out how to quote unquote play the game, and it worked literally on a dime from one day to the next, I could not be successful with women I felt like within my sexual market value. Let me not oversell this, but within my sexual market value, I could be successful sort of when I wanted to be. And it was such a set of rules that I was following that I actually had to laugh out loud. I was like, I cannot believe it took me this long to just figure out that, I have to present myself a certain way, that you don't want to go for the clothes right away, that this is about a strategic revealing of your personality. It's about understanding what's going to get them exciting. You might hate this description, but it's marketing. Once you understand that you're a brand, you have to establish what your brand means. You have to make them feel some kind of way about you. The way that you're establishing your brand better be real. And one of the things I'm sure we'll talk about today is I take all of this. I've been married to the same woman for 21 years. We've been together for 23. To me, that we had to seduce each other in the beginning. And then at some point, that becomes a deep, long-term pair bond, which is a totally different game. And I really hope everybody can get good at both games, because that's really how you end up having an amazing love life that will ride with you through the ups and downs. But seduction is real. People need to stop pretending that it's not. From my perspective, this is based on evolution, that women, and it's interesting because I think you push back a little bit on looking at the 30,000 foot view of men and women. I'll make a case for it. If you hate it, tell me you hate it. But here's my case. There's a quote, I forget who it's by. Forgive me, whoever said this. This is a paraphrase. Any individual woman is a mystery, but taken as a whole, they're a mathematical certainty. It was technically said about men, but you get the idea. And that makes sense to me. And so you're right. Like ultimately,
I had to figure out my wife. I didn't just have to figure out women as a general thing. I had to figure out my wife. But every time I think of my wife as thinking like me, I can't predict her behavior. The second I lump her in the mathematical certainty of women are like this, then I'm way closer to being able to predict her behaviors. And so I think it's very important to understand the distinction between how men think and how women think, what we fantasize about, how we approach sex, what we think of as seductive. Okay, but you're not going to get that from a book. So you can read all of the facts about this is how women think, et cetera, et cetera. The best way to do that is by observing them. So if you pay attention to the person that you're trying to see, if you start paying attention to women as young at the earliest possible age, you will see these qualities in them. You will see the fact that they are interested more in stories, that they don't want to feel like it's just about sex and you're in a hurry to get them to that point. These aren't great mysteries that you need to read from a book. It's pretty clear if you pay attention, right? So I just want to get men out of the mode because we are so goddamn analytical. It's such a problem that reading a book, reading a text, having algorithms is the only way we can think. Get the fuck out of there and pay attention to the person. Develop your mirror neurons. Develop your observational skills. Develop the human part of you that observes, that feels what the other person is feeling. If you depend so much on things that you've learned from the art of seduction or from a book, it's going to make you a bad seducer. But to the degree that you can click into those human qualities that we all possess, where you sense the emotional tone of the other person, Hello guys, welcome to my channel. So first of all, make sure you have a good reference beside you, because you should constantly look at it. Okay, this is how I do it. First, select the clay strip brush and start putting some clay on the mouth part. This is the first step, so make sure you do it on a low poly mesh. Once you've done that, smooth out the edges by holding shift. Now press shift C for crease brush, then make the line in the middle of the mouth. Now go to modifier section. Then add multi-res modifier and subdivide one time. Now continue pronouncing that line using crease brush. Then by holding the control, make the upper lip more visible. Do the same thing for the lower lip. Then let go of the control. Increase the size of the brush by pressing F and empty out the bottom of the mouth. Now lower the size of the brush and pronounce the lips even more. Press G for grab tool and shape the lips based on the reference. Now pick up the crease tool and sculpt every major detail you see on the lips. You gotta look for them in the reference. The lips need to be puffed up a bit more. So press I for inflate and make the surface of the lips a bit more puffy. Also do the same thing for the sides of the mouth. Then carve in the top of the mouth. Now subdivide one more time and pronounce the lips even more. Pick up the grab tool again. Make sure you shape the lips correctly. Then go to the sides and push them inside a bit more using grab tool. Also don't forget the chin. Okay, now it's time to go around the mesh and fix it from every angle possible. Having some reference photos with different views would help a lot in this case, because sometimes when you look at it from front view, it looks great, but once you rotate it and see the side, you go, it's not quite right. So make sure you fix every angle. In this case, I noticed the lips should be more puffy. And what did we use for that? Inflate brush. Made the bottom lip a bit bigger. We also have some bumpy part on the upper lip that we can take care of using the same brush. The more you work on it, the better it gets. I pick up the grab tool again and drag the upper lip to the lower lip a bit more. Using the crease brush, I carved in the top of the mouth even more and holding control for the edges. Also remember, you can smooth out any weird edges or the parts where you think you messed up by holding shift. I noticed the sides of the mouth need to be corrected, so I drag them to the outside and smooth it out. I pronounce the lips even more using crease brush. Then when we're close to the finish line, I subdivide one more time and start sculpting a line right on the edges of the lips. I do this for both upper and lower lips, then smooth out any sharp edges.
So this is how I sculpt the mouth. You can work on it even more and make it more realistic by adding some wrinkles to the lips, cracks, bumps, and all that good stuff. But this took me like less than 10 minutes to make. I'm sure you can do it too. Thank you guys. The first questions you have to ask yourself in order to know what's needed to open the mouth of a 3D character in Blender or ZBrush, it's, do you have a character? Does he have a mouth? So if he has mouth and it's a character, probably you can open its mouth. Why should we open the mouth? So usually we're doing this for game or for cinematic, so the character can talk or open its mouth, which is great. So we are doing this for the high poly model. So then it has to be made in low poly and retopologized. This you can see, of course, in my course, which is absolutely free here in this channel. In the playlist section, you can go to the playlists, and then the playlist with 38 videos you can check out there. You can see the whole making of a whole character in Blender for games. Next, we have to open the mouth. So in order to open the mouth, you need to have a head with mouth, of course. But if you don't have a head, you can check out my courses in the description of the video where I show how to make heads, how to make other things, whole characters, ZBrush, Blender, everything. But let's start. We have to go in Blender to sculpt mode. In ZBrush you don't need to go to sculpt mode. Select the masking brush and start masking the lower, because you have to start from the bottom, which is the lower jaw. Make sure you select everything, you mask everything, because if you leave some spots, when we start rotating this, because we are masking it and then we will invert the mask, so this will be the only unmasked thing of the whole head. And make sure you mask everything. Sometimes I leave, of course, without wanting to leave, I leave some spaces unmasked, and when I start moving, for example, the last time I left a little bit of thing here in the middle of the chin, and he started to have a double chin, and yeah, it was not needed. The idea is to open the mouth just a little bit, so we have to move the jaw a little bit down, like this, just a little bit, and then we will have open mouth. Of course, it's a good idea to also have some teeth. How to make teeth? Of course, you don't need to make the teeth completely like every and each tooth separately. If you want to be a perfectionist, yes, you have to do that. But if you kind of want to make just teeth which would work, because they are not seen too much, you can do them from one mesh. I did it from a cylinder, this one, and from this one I duplicated it and did the bottom one. So I have teeth. Of course I will need a tongue. I will do it later. Probably the tongue is most likely very easy to make, but yeah. So this image is from CG Trader, I think, so you can find all kinds of 3D models for teeth and tongue out there. You can of course buy them or you can make your own, but I just use this as a reference. It's not an issue. Nobody will sue me that I'm using this presentation image for the 3D model as a reference. So we go here. The idea is to make the mask the whole lower jaw with this bottom part here, and here we need it to be smooth mask relatively, but it's not a big issue if it's not super smooth, because we will then fix it. We will always have to go and fix things. So I will reverse the mask by pressing A and going left, and now we need to rotate. So we go to the rotate, and we can rotate from here, but the pivot of rotation, usually we want it to be a little bit closer to the jaw itself. Ideally it will be here, in this point here, just forward and to the bottom of the ear. But since we cannot quite do it here in Blender, it's difficult, we can go and pivot to mask border. Then the pivot will come around this area. Pivot to mask border you can find, I think, in sculpt, pivot, sculpt, set pivot, pivot to mask border, or to unmasked, for example, you can do it. What else? So sculpt, set pivot, pivot to mask border. I'm using this, and I put it in my quick favorites, which is with Q. Okay, now what we do is open the mouth, so just slightly rotate, and you see I'm now moving the nose with it, which is not good. I will Control Z and I will go with the mask brush and just, come on, mask brush, okay, and I go to the nose, and I see that I have
my mask here is not so strong, which is not good. It will move some things which I don't particularly like to move, because we don't want to change the facial features at all. We just want to open the mouth, and that's it. Because this model is for freelance, they allowed me to show it, and this model is approved. They approved the face, and I can open the mouth now. But the face has to remain the same, basically. It's just the mouth to be opened. So I will go here again, pivot to mask border, and with the red circle, I will just do this. And I think this could be enough. This should be enough. And the jaw has to go a little bit backward, so I will go with the move and move it a little bit backward. Because when we open our mouths, our jaw is not going only down, but it's going back down, like this. Because the pivot of rotation is here, it should go a little bit. So now what we should do is erase the mask. We don't need the mask anymore, so I will remove the mask by pressing A and going right, and then I will just go ahead and move in. So with the standard brush, with control, I'm just moving in the polygons. You can see that the polygons are very bad looking, and we have to fix that, of course. But overall, this is how you do it. And now I will remesh. If you are in ZBrush, of course you will Dynamesh most likely. If you cannot Dynamesh, it's a problem. Especially it's a problem when you're using already set mesh and you are just working over an existing mesh who doesn't have open mouth but have nice topology, and then you want an open mouth, and then we will have a little bit of issues. But probably you can select a row of polygons here in the middle and then extrude them in, and then extrude them more and inflate them inside. Probably something like this can be achieved. But if you are like me and making everything from scratch, which I don't recommend exactly, because if you want to be fast in freelance, you probably want to work more and more from base meshes. But since I'm fast, you probably all know that I'm pretty fast in creating some stuff. It's not a problem for me, so it's fine. Now there are things that needs finishing here, but I'm trying to just open them out first, have everything correct, and then increase the poly count so everything will be smooth, and make final changes at the end. Because in Blender especially, you don't have the options to have super huge amount of polygons, and with that you want the polygons to be as low as possible up to the last possible time. Now I will go and R, which is remesh, go to 0.004 and Control R to remesh it. Let's see, now it's remeshed, and now we can smooth the inner portions of the mouth. We cannot see, but I'm trying to see what's happening with this mouth, and yeah, without the teeth and everything, but it doesn't matter. So in the high poly, you don't need to actually make inside of the mouth. The inside of the mouth can be made in the low poly. The whole cavity inside can be made in the low poly. In the high poly, what you basically need is this transition between the upper lip and the lower lip and the inner portion of the mouth, and that's it. That's what you need. But I will just finish it a little bit more in here, just in case, just to see.
see what happens. In this episode, we're gonna be sculpting the mouth. Doesn't get any better. You definitely need to try these gloves. The project for next month is definitely happening, and I answer questions and hang out with people. I really appreciate it, and to show you my appreciation, I'm gonna give you the bonus contents for this tutorial for free. I'm pulling that backwards for that reason. A slight M shape, even though we just started, just want you to have fun. That is what was crashing Blender. Beautiful. The lower part, kind of lost my voice. This is looking good. We're gonna take the clay strips and add a very important part, and that is the final result. So yeah, And I will see you guys real soon. wait, hold up, let's rewind. Put it to airplane mode. Hey guys, just give me 1 second. I'm getting some things ready. Yep, definitely no fancy coffee for me, man. Just a pure coffee with no sugar. Doesn't get any better. This is one of the best investments I've ever made. So if you're drawing, sculpting using a tablet, or even drawing on a paper, you definitely need to try these gloves. Hey, how you guys doing? My name is Yan. In this episode, we're gonna be sculpting the mouth. And I actually got this idea from my latest stream on YouTube, so if you guys didn't check it out yet, the latest video that I published was actually a live stream. And when I streamed, a lot of people came. You guys were pretty awesome. So if you're watching this and you're in the stream, again, I really love the stream, so I'm gonna be doing it again. And someone asked me how to do the lips, so I decided to make a video on it. But hold your horses, before we start talking about the lips. जॉय 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 हाँ भाई 1000 रुपए हैं 1 मिनट रुको जॉय जॉय इधर आइयो हाँ ना मुझे कुछ दिखाना है इधर आइयो ये देख क्या है ये शक्ल दिखा भाई ये क्या है क्या हुआ क्या है ये $15 कितने होते हैं कितने होते हैं भाई 1050 जो अब बोल तरक्की नहीं हो रही कह रही है स्क्रिप्टेड है भाई $15 भाई भाई आज तो बयान जो घर से निकाल ले निकाल दो भाई किसी ने $6 भी भेजे भाई ये जॉय मेरा छोटा भाई बट मैं इसका बहुत बड़ा भाई लगता हूँ खड़े हुई हो नहीं खड़े हो ना भीख नहीं भाई टिकट है ये तो नहीं भाई क्यों खड़ा हूँ भाई मेरा बल्ज दिख जाएगा और फिर तू बोलेगा भैया आप इतने बड़े क्यों हो जाए इधर से अब मिसोजिनी फैलाते हैं आ जाओ वही कांड जो भी आ रहे हैं क्या हम पब्लिक है ना यस पब्लिक है हम हेलो हाँ भाई मैं अभी लाइव हूँ यार बाद में बात करें यस सर कैसे हो भाई आज जल्दी कैसे क्योंकि यार मैंने कल ना तुम लोगों के साथ में कर दी बदतमीज़ी और वो चीज़ मेरे से सहा नहीं गया भाई मेरे को लगा कि भाई यार यहाँ पे भाई लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं क्या कर रहा हूँ ब्रॉलाला नहीं भाई दिस इज़ नॉट डन भाई दिस इज़ नॉट डन हेलो स्पीडी भाई कैसे हो हाँ आज ना भाई
मैं ना ये सोच रहा हूँ कि मैं ना मतलब एक ना ऐसा बन जाता हूँ कि ऐसे वो जो नहीं स्नेक ऑयल सेल्समैन, जिसको कुछ आता वाता है नहीं बट ज्ञान चोदना पूरा आता है भाई, कुछ पता वता नहीं है बट अच्छे से ज्ञान चोदाई में सबसे आगे, वो बन जाता हूँ भाई मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, और वो भी रिलेशनशिप्स के ऊपर। मेरे को लगता है मेरी जितनी लिमिटेड इंटरेक्शन रही है उससे जो मैंने सीखा है ना वही बता दूं। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ज़्यादा पता है लोगों से, बट ये भी समझ लो कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ना एक से नमक डाल के लेना। वूशैंग वीडियो वैन अभी आ जाएगा भाई, आज तू ब्रेकअप करना सीख ले पहले। और लौंडे कैसा है? बढ़िया भाई। हाँ ऐड कहाँ है? हाँ भाई तुम लोगों को ऐड नहीं दी ना मैंने, ये लो भाई ऐड भाई। पहले लड़की से बात कैसे करें ये तो बता। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे ही 40 करके अपना अकाउंट खाली कर दूंगा। ठीक है भाई, इट्स नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी मनी यू स्पेंड, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स यू मेड। ठीक है, अब आपने मेरे को 40 दिए, अब मैं कुछ मिनटों के लिए आपका दोस्त हूँ और वो दोस्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई, बट थोड़ी देर के लिए इट वॉज ऑल अबाउट ऑल द फ्रेंड्स यू मेड। हाँ यार, ये सारी जो चीज़ें ये स्पैम करते रहते हैं, इन्हें पसंद नहीं मुझे। हाइड यूज़र तो नहीं, इसको मेरे को ब्लॉक करना है। रिमूव, इस बंदे को निकालो यहाँ से। आई डोंट लाइक दिस गाय, पुट यूज़र इन टाइम आउट। लेट्स हो हाउ टू ब्रेक अप विद अ गर्ल हु इज़ नॉर्मल नॉट शेडी और मच शिटी। आएंगे धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। सब चीज़ पे एक तरीका होता है आने का, है ना। आप पहले देखिए, सबसे पहली मेरी स्ट्रीम थी कि उल्टा जा रहा है भाई मेरा सामान, कि भाई लड़कियों को अप्रोच कैसे करें, कर चुके हैं हम इसके ऊपर बात। फिर मैंने बोला रिलेशनशिप में कैसे हैं, है ना। फिर हम आए हाउ टू मूव ऑन, फिर अब आ जाए हम उस पर ब्रेकअप कैसे करें। इट्स ऑल हे वायर, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, किसी को कुछ सर पैर नहीं है, बट आई थिंक बहुत हेल्प करता है ऐसा अप्रोच। यू डोंट नो कि क्या आने वाला है आगे से, एंड दैट इज हाउ आई वुड डिफाइन कि ब्रेकअप कैसा होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज लाइक इफ यू आर अ गाय एंड यू वांट ब्रेकअप फॉर अ वुमन, इट शुड बी अ सरप्राइज। इट शुड बी अ सरप्राइज। हर बंदी कहती है ना आई लाइक सरप्राइजेस, आई लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ब्रेकअप विद हर ऑन हर बर्थडे। जो कहती है ना औरतें कि मैं बड़ी ही वैसी टाइप की औरत हूँ, मेरे को गिफ्ट ले दे के मेरे को अच्छा लगता है, तो उसको बर्थडे पे ये गिफ्ट दे दो। शी विल रिमेंबर यू फॉर एवर, शी विल चेरिश दैट मेमोरी फॉर एवर। बिकॉज यू एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप करना इज नॉट ओनली एन एडजेक्टिव, इट इज ऑल्सो एन ओकेजन। माइट लाइक गिव देम समथिंग टू सेलिब्रेट, कि मतलब आपने इस तरीके से ब्रेकअप किया कि वो 2 साल तक रोज अपने बर्थडे पे एक पैग एक्स्ट्रा पीती है आपके नाम की। रिशु आइडिया कॉपी, हाँ रिशु भाई ने कहा था कि भाई मैं लोगों को एडवाइसेस दूंगा और वो सब करेंगे। तो अर्पित बाला अगर रिलेशनशिप्स में बात कर रहा है तो फिर वो कॉपी है। इतने ब्रॉड टर्म में से अगर मैंने एक चीज के ऊपर एडवाइस देना है वो कॉपी है। ठीक है भाई। हाँ नकुल कह रहा 100 बिल्कुल। तो पहली चीज़ मैं कहता हूँ, अगर आपको किसी के साथ में ब्रेकअप करना है, पहली चीज़ तो जो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप करना इज अ स्किल। हर किसी को ये ऐसे नहीं आ जाता, ऐसे नहीं हो जाता भाई ब्रेकअप करना। ठीक है, क्योंकि ना एज मैन हमारे लिए ब्रेकअप करना ना बहुत मुश्किल होता है। फॉर फीमेल्स इट्स वेरी इजी बिकॉज men they look at women as possessions, women they don't। उनको बंदा बस ऐसे चाहिए होता है कि ये मेरी चिक चिक समझ पाए, ये मेरी चिक चिक सह ले। फॉर मैन इट्स लाइक कि ये मेरी थी बहनचोद और इसका सिर्फ और सिर्फ मैं हूं बहनचोद। भाई लड़कियां बात करते वक्त बहुत ओपन हो जाती है, लेकिन मैं होता अभी रुक जाओ। तो पहले तो आपको ये रियलाइज करना है ब्रेकअप करने से पहले
शी इज नो लॉन्गर अ पोजेशन, शी इज जस्ट अ वुमन दैट यू वर इन टॉकिंग टर्म्स विद. ठीक है. बहुत सारे लोग ना मेरी ऐसी बातें सुनते हैं और ये लोग बोलते हैं अर्पित ये तो मैन हो रहा है, ये तो प्लेयर है, ये तो स्टड बंदा है, ये तो फक बॉय है. And they have the audacity to think that I'm getting so much pussy, which is entirely not true. I'm just a guy who knows a lot of women that don't talk to him anymore. And that's all. And that's all. तो अगर आपको ब्रेकअप करना है, सबसे पहली चीज आपको रियलाइज करनी है ब्रेकअप करने से पहले, शी इज नो लॉन्गर अ पोजेशन, शी इज जस्ट अ वुमन दैट यू यूज्ड टू नो. That's all. Keep your emotions aside, be as emotionally stable as possible, and break up. And that's pretty much it. Thank you for watching my live. Bye. नहीं. पहली चीज जो आपको रियलाइज करनी है ब्रेकअप करने से पहले, ठीक है, फालतू में ब्रेकअप नहीं होते हैं. यू ऑलवेज, क्योंकि अगर आप फालतू में ब्रेकअप कर रहे हो जस्ट टू गेट अ किक, यू आर नॉट ब्रेकिंग अप विद अ गर्ल, यू आर जस्ट बीइंग मैनिपुलेटिव. यू आर यूजिंग ब्रेकअप एज अ क्रच टू गेट समथिंग दैट यू वांट. Babe, I don't think this is working out because I don't know, bro. हमारा physicality बहुत कम हो गया. Just because she didn't suck your dick, हम लोग बहुत कम physical हो रहे हैं. We need to break up. Just because she didn't kiss you on your birthday. Nah, man. You need something concrete. अगर आप ऐसे breakups को use करने लगोगे ऐसी चीजें लेने के लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा. एक बंदा कह रहा है माइक म्यूट कर लो फिर मजा आएगा देखने में. मैंने 40 ले लिए भाई, मेरे को ज्यादा मजा आ गया. तो आपने हमेशा ट्राई करना है कि एक कॉन्क्रीट रीजन होता है. अब कॉन्क्रीट रीजन क्या होता है ना? कॉन्क्रीट रीजन क्या होता है? इट कैन बी एनीथिंग दैट बॉदर्स यू इमोशनली. बट ऐसा नहीं कि एक बार युवा चल बहन की लोड़ी माच दा, तेरी तो जरूरत ही ना मुझे, अरे तू है कौन, ये सब नहीं करना होता. यहां पे मैं एक लेकर आता हूं, एक रूल होता है 3 स्ट्राइक रूल. वाई 3 अर्पित? अगर मेरी बंदी मेरे पे चीट कर रही है तो मैं उसे चीट करते हुए 3 बार देखूं उसके बाद ब्रेकअप करूं? यस. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कि मतलब आई एम ट्राइंग लाइक यू नो ककहोल्ड अ लॉट ऑफ जेंटलमैन. मैं बहुत सारे लड़कों को इमैस्कुलेट करना चाहता हूँ या फिर उन लोगों को ऐसा फील कराना चाहता हूँ कि उनकी बंदी उनसे प्यार नहीं करती. नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो मैंने बोला कि अगर आपके ऊपर कोई बंदी 3 बारी चीट कर रही है, वेट इट आउट. आपको 3 स्ट्राइक्स का रूल जो होगा ना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सपोज करो आपने एक बारी चीट कर लिया उस बंदी ने आपके ऊपर, यू कैन ऑलवेज थिंक, एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू ऑल्सो, कि मतलब चलो ठीक है भाई कोई नहीं, बट वो आपको चुभेगी बात. ठीक है, अब आपको चुभेगी वो बात, है ना? अब आपने सोचा चलो ठीक है इसने कर दिया, अब रोना धोना हुआ, उसने बोला कि नहीं होगा आगे से एंड एवरीथिंग, एंड यूर लाइक ठीक है कूल 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 कूल, बट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई अगली बार हुआ माच दा भाई. फिर से हुआ, जैसी फिर से हुआ ना, अब आपको आना है प्रेपरेशन पे. ठीक है, एज गाइज वी आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्रेकअप, विमेन आर. जब 2 बार हो चुका है ना वही कांड जो भी उसने किया है, तो उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है बकचोदी. फिर आपने स्टार्ट करना है किसी और बंदी को डेट करने की कोशिश. गो आउट देयर, फाइंड अ वुमन हु हैज सेल्फ एस्टीम इश्यूज, who will do you no matter what. Rebound that goal. You have to have a rebound goal. और उसके बाद क्या होगा, जब आपका वो रीबाउंड वाला गोल बन जाएगा तो आपको वो चल रहा है साइड बाय साइड, 3rd टाइम you do the cheating. You do the cheating, man, and just fucking break it off. Just fucking break it off. बिकॉज उस पॉइंट पे जब आप ब्रेकअप करोगे ना, उस बंदी को ऐसा लगेगा फक भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये इधर. विमेन दे कैन नॉट फकिंग कॉम्प्रिहेंड भाई, जब बंदा उनसे पहले कोई चीज कर देता है उनके दिमाग में फ्यूज उड़ जाते हैं. तो उस पॉइंट पे ना कट जाता है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ब्रेकअप इसलिए करो जस्ट टू फकिंग गेट अ किक आउट ऑफ इट. नहीं भाई, कि आपको कुछ सेल्फ एस्टीम बूस्ट चाहिए तो ब्रेकअप कर लिया. नहीं, ब्रेकअप आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि योर हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिलेशनशिप.
नो मैटर वॉट, इफ यूर अ गर्ल और अ गाय, आपकी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। रिलेशनशिप आपकी वैसी वाली शिट नहीं होती, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये शिट नहीं होती भाई रिलेशनशिप्स में। तो इफ यू फील लाइक कि आई एम नॉट फकिंग बीइंग लाइक यू नो रिस्पेक्टेड, आई एम नॉट फीलिंग गुड इन दिस शिट होल, fuck a fat bitch with self-esteem issues. Get it over with. भाई दोस्त का ब्रेकअप कैसे करवाऊं, उस पर टिप्स दे। भाई अगर आपको अपने दोस्त का ब्रेकअप करवाना है ना, तो बताऊं क्या होता है, छोटी चीज़ होती है। आपका अगर दोस्त है, आपको पहले उसके साथ में जाने बैठना है। वो हमेशा, ऐसा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। वो बोलेगा कि भाई ये ना बहनचोद ऐसी है, भाई ये बंदी क्रैक है, भाई ये बंदी ये है। भाई आपको ना उस पॉइंट पे बताऊं क्या करना है, बंदी की साइड लेनी है। नहीं भाई तू चूतिया है, भाई वो बहुत अच्छी है, भाई तेरे को अकल नहीं है। भाई उस पॉइंट पे बताऊं बंदा क्या करेगा, गुस्से में आएगा और फिर उसको लगेगी ईगो हर्ट कि ये बहनचोद ये भी इसकी साइड कैसे ले रहा है, ये है कौन, इसको तो पता भी नहीं है मेरी रिलेशनशिप कैसी है। फिर वो बताएगा अपनी रिलेशनशिप के आपको मतलब गहरे गहरे राज कि भाई उस दिन ना उसने ये किया था, भाई उस दिन ना उसने ऐसा किया था। उसके बाद बताओ आपको क्या करना है, यूज दैट अगेंस्ट हिम। भाई देख ले भाई उसने ये तो कर ही रखा है, तो क्यों है मेरे को तो समझ नहीं आता। कान भरो। मैनिपुलेटिव, बिल्कुल भाई। यार तुम लोग ना ऐड लो भाई, ये लो भाई ऐड। भाई लड़की मेरी प्रायोरिटी नहीं, इज इट ऑल राइट? बिल्कुल। योर फकिंग प्रायोरिटीज इन लाइफ शुड बी योर रैप करियर, your somewhat good comedy career, and then like your like gymming and everything, and then उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा, and then तुम्हारा मतलब वो बेटा 2 महीने वाला, and then तुम्हारी गर्लफ्रेंड, and फिर उसके नीचे तुम्हारी बेबी मामा। हाँ भाई अगर काम वाली मेड से अफेयर हो और घर वालों को कैसे बनाए? भाई मेरे को ब्रेकअप्स के ऊपर बात करनी है, मैं इन सब बातों में नहीं कर सकता। ब्रेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे, व्हाई मेन स्टेयर एट वीमेन। अबे भोसड़ी के कोरा है क्या ये, पागल है तू, कुछ भी लिख रहा है। बंदीबाजी के पैसे नहीं है इसलिए ब्रेकअप करना, बिल्कुल सही बात है। आधी ऑडियंस सिंगल है। हाँ भाई बहुत सारे लोग मेरे बोलते हैं हम पे बंदी ना है, हमें ज्ञान दे रहा ब्रेकअप का, पागल। इट्स सैड कि तुम लोग इस बात को यूज करके हंसते हो। हम पे तो है ही नो। ये तो वही बात हो गई भाई, कोरे कागज पे तुमसे किसी ने बहनचो साइन वाइन करवा लिया, तुम्हारी पूरी जायदाद ले ली, और उसके बाद तुम करे अरे हमें तो आता ही ना बहनचो, पता नहीं क्या ले गया। भाई क्रश का ब्रेकअप कैसे कराऊं? डिपेंड करता है भाई आपकी क्रश किसके साथ है। आई विल ऑलवेज से कि भाई अगर आपको अपनी क्रश का ब्रेकअप कराना है, आप मत ही कराओ तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आपकी क्रश को पता है कि आपका उसके ऊपर क्रश है, तो मतलब वो कोई भी इंटरेक्शन उसकी लाइफ में अगर आपका होगा किसी और के साथ जो उसके साथ रिलेटेड है, वो उसको ऐसे ही देखेगी ये करना क्या चाहता है भाई, ये है कौन, ये क्यों है इधर। स्क्रूटनी नहीं चाहिए होती है भाई, जब ब्रेकअप चाहिए होता है ना, स्क्रूटनी नहीं चाहिए होती है। अगर आपको शकुनी बनना है ना, तो ऐसे काम करना है कि भाई वो पर्दों के पीछे हो, पता भी ना चले। स्क्रूटनी भाई, तुम लोग ना ऐड लो भाई, ऐड। और को बुला नहीं भाई। ब्रो आई एम अ 3 गॉट गवर्नमेंट जॉब, अब 10 on 10 लड़की से शादी है, विल शी लव मी? या कैसे भी बात कर रहा भाई। हम पे तो है ही ना। दूसरी लड़की पसंद है, पहली से ब्रेकअप कैसे करूं? आई एम टेलिंग यू ब्रो, मेरे को ना भैंचो पता नहीं क्या हुआ है, पिछले 2-4 दिनों से ना मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं भाई लोगों के,
एक तो एक लड़की ने मेरे को एक भाई बहुत लंबा चौड़ा मैसेज भेजा कि भाई मैं एक बंदे के साथ उतने टाइम से रिलेशनशिप में, और मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आता उसके साथ में रहना, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल अर्पित, आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो बंदा मतलब बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मतलब वो मेरी सारी बातें सुनता है, सब कुछ करता है, बट दी ओनली थिंग इज़ कि मतलब उसके साथ में रहती हूँ, अगर मैं कुछ बताती भी हूँ ना मेरे को और रोना आता है। और मैं ना समझ गया, शी इज डेटिंग अ पुसी, शी इज डेटिंग अ फकिंग पुसी एस मैन। समटाइम्स अगर तुम अपनी रिलेशनशिप में इतने ज्यादा हो गए ना, क्या हो गया, क्या हो गया बेब्स, हाँ बताओ भाई क्या हो गया भाई, nobody likes that bro, where's your fucking self respect। औरतों को ना चिक चिक ये नहीं होता, औरतों का ये नहीं चाहिए कि कोई बंदा भैंचो आउट ऑफ द वे जाके मेरे से पूछे मेरी चिक चिक क्या है। औरतों को ये कि जब मैं चिक चिक करूं वो सुन ले, बस बस। इफ यूर गोइंग आउट ऑफ योर वे टू फकिंग लेट अ वुमन भाई चिक चिक करो यार मुझे सुनना है बिकॉज आई लव यू, उसको ऐसा लगेगा कि क्या है, उसको फिर बुरा लगेगा कि उसको चिक चिक आती है। ये एहसास नहीं कराना कि भाई उसको बहुत चिक चिक आती है, नेवर डू दैट। 4 years of relationship and he cheated on me, what should I do? See, you're a fucking woman, ठीक है। Now you will always have that edge over him, that you're the woman in this relationship. I would say stick with it, 6 महीने दो and then cheat on him अच्छे तरीके से। Try to fucking like be good with him, try to like अच्छे terms पे आओ, be as like कि मतलब you're there for him emotionally, सब कुछ सही है, then one day just what's up ये लो भाई तुम एड। How to break up with a guy who's blackmailing you? That's a very good question. अगर कोई बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं ये लीक कर दूंगा, तो आपको क्या करना है? एक ना कॉन्सेप्ट होता है औरतों के घर में, मामा और मेरे भाई, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपके घर में भाई तो होंगे ही, मामा भी होंगे ही, उनको बता देना है, एक कॉल करवाना है, फिर उसकी लगानी गांड अच्छी वाली। हाँ, पुलिस रिपोर्ट नहीं भाई, पुलिस रिपोर्ट नहीं। भाई अगर बंदी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और बिल्कुल टॉक्सिक ना हो तो उससे ब्रेकअप कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, हल्का फुल टॉक्सिक चाहिए होता भाई रिलेशनशिप्स में, नहीं मज़ा नहीं आता भाई। लड़ाई ना हो औरत के साथ में तो मज़ा थोड़ी है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स जीतना औरतों से इम्पॉसिबल होता है, बट द स्ट्रगल एंड द मियर अटेम्प्ट कि हाँ शायद से आज मैं जीत पाऊं, समझ रहे हो, दैट इज वॉट कीप्स अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स गोइंग ऑन। बट अगर आपको ऐसी बंदी से ब्रेकअप करना है, इट जस्ट मीन्स दैट शी इज बोरिंग, इट जस्ट मीन्स दैट शी इज फकिंग बोरिंग। तो अगर कोई बंदी बोरिंग है तो आप क्या करा करो कि मतलब आप मस्ती मारा करो ज़्यादा, ठीक है, आप ज़्यादा मस्ती मारा करो, ये वो करा करो, आप ज़्यादा बाहर जाया करो। वो आ नहीं पाएगी बिकॉज शी इज़ लाइक डैम बोरिंग, लाइक है ना, बिकॉज शी इज़ बोरिंग, शी डज नॉट फिट वेल। तो आप ज़्यादा बाहर जाया करो, ज़्यादा पार्टीज़ किया करो, उसको ज़्यादा फोमो होगा, फिर वो ना थोड़ी बहुत टॉक्सिक होने लगेगी, फिर आपको भी लगेगा कि नहीं भाई, क्योंकि फिर वो उसने देखने लगेगी ना कि भाई वो बाहर जा रहा है यार, मैं क्या करूँ, फिर उसको चिक चिक आएगी, फिर वो टॉक्सिक होगी, फिर सोचना आपको ब्रेकअप करना है नहीं। ये लो भाई तुम लोग ना यार मेरे को ऐड लो भाई, सुपर चैट तो तुम देने नहीं वाले हैं ना, इट्स ओके ब्रो, कोई नहीं। हाउ टू पुल, अबे ब्रेकअप के बारे में भाई, हाउ टू ब्रेकअप विद माई क्रश। शेक अंडे से बहन जो मुर्गी निकली नहीं है, इससे 4 अंडे और आएंगे। Uh, 2 years of unofficially dating my crush. Is it okay? I guess so.
एक मिनट रुको भाई, मैं आया मुत्ती मार के. पैसे. इंडियन गीक ही आ गया भाई. यस, शाउट आउट टू इंडियन गीक. बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ. मुत्ती साउंड, हाँ भाई बिल्कुल. आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ. बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये. आप लोगों को शायद से नकली लगेगी, बट थैंक यू सिद्धांत भाई. हर ब्रेकअप को, कॉलर ऐसे करने दो जिससे और टॉक्सिक लगूँ मैं, ठीक है. देखो, हर ब्रेकअप जो होता है ना, वो कभी भी म्यूचुअल होता नहीं है. ट्रूली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नेवर म्यूचुअल. बट एज अ मैन, I don't know where it is written, but as a man you have the responsibility to ensure कि हर breakup mutual ends पे खत्म हो, so that ऐसा ना लगे कि आप abusive थे. Image matters. It's very easy for a guy to be labeled abusive after a breakup if he has not, like, you know, properly like broken up. Like I remember this one woman that I was involved with. I just broke up with her because she was like stupid, like doing crazy shit, and I didn't have the time to like explain it to her कि भाई कि तू क्यों है चूतिया. Because I felt like अगर मैं उसको ये बताऊंगा तो उसको पता चल जाएगा उसमें क्या गलती है और वो उसके लिए अच्छा होगा. But I did not want to give her that privilege. I wanted her to be as stupid as she is with other guys as well. I'm not going to give her any amount of charity. बट वही हुआ. शी फेल्ट लाइक कि ये बंदा तो भाई मेरे को यूज़ करके निकल गया. कुछ यूज़ नहीं किया. इमोशनली ना, सेक्सुअली ना, फिजिकली ना, नथिंग लाइक दैट. वी डिड नॉट डू एनीथिंग. वो जाके भाई लोगों में अफवाहें बताऊं क्या फैला रही है यार. Because I did not like break things up with her अच्छे से. She is like going out there and telling कि भाई यार एक बार ही ना हम लोग सेक्स कर रहे थे और एकदम से अर्पित आता बोलता यार मेरा क्या होगा करियर वाइज. और ये जाके ये मेरे दोस्तों को बता रही है. Now, first of all, hold up. I'm not denying these allegations because that happened. Yes. एक पॉइंट पे आई वॉज फकिंग लाइक, यू नो, आई वॉज डाउन ऑन माई नीज. मैं थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था, मतलब मैं प्रॉब्लम में था. आई वॉज लाइक, यू नो, फक्ड अप. आई वॉज लाइक इस बंदी के साथ मैं आज तक वल्नरेबल नहीं हूँ. लेट्स बी वल्नरेबल टुडे बिकॉज वी आर नेकेड. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट, लाइक, यू नो, बीइंग नेकेड. लेट्स बी वल्नरेबल. बट नाउ जस्ट बिकॉज द ब्रेकअप वॉज सो फकिंग वन साइडेड, शी ट्विस्टेड इट अराउंड. Like, you have to protect that image of yours that you're not abusive, because then these women will go out of their way to defame you. Cap. Actually, ये आप जाके साहिल से पूछ सकते हो, ये हुआ था. भाई यार तुम लोग मेरी सुपर चैट नहीं दे रहे हो यार. This is so bad. 400 लोग हैं, कोई सुपर चैट ही नहीं दे रहा तो फिर कैसे होगा. थैंक यू आकाश भाई. बट या, हाउ डू यू मेक इट सीम लाइक कि जो ब्रेकअप हो रहा है उसके बाद से ऐसी चीजें ना हो. यू हैव टू मेक द ब्रेकअप एज हेल्दी एज यू कैन फॉर योर सेक एंड हर. एंड इट ऑन अ म्यूचुअल नोट. आप जाओ उसके पास, बोलो कि बेब आई डोंट थिंक इट्स यू, इट्स मी. बट लेट हर नो that it's actually her. So complete it like, I don't think it's you, it's me. Like, as in like me not being attracted to you. I don't think it's you, it's me not being attracted to ugly girls. That's all. That's all that you have to say. Thank you, Aftar bhai.
अथार कुरैशी, क्या बात है भाई। यार कुरैशी भाई, आप लोगों का तो ब्रेकअप करना बड़ा आसान नहीं है। Hey yo, what's up? तलाक तलाक तलाक। थैंक यू भाई प्रेड, थैंक यू एल कुई। कैंसल क्या है इसमें भाई? इसमें क्या कैंसल है? इट्स ट्रू। ऐसी यहाँ है, थैंक यू भाई नितिन भाई। इसमें क्या कैंसिल है भाई? Come on man, don't fucking cancel me on this. I'm just stating facts. That's why I fucking like, you know, I would love to do like shit like this one day, like talaq talaq talaq, and she's like, oh, kya? I was like, हल्की सी कुछ ऐसी रोटी थोड़ी खराब हो गई और ऐसी दबी आवाज में तलाक तलाक। I'm just kidding man, I'm not gonna do that यार, क्या बात कर रहे हो। हेलो बालाजी, आओ ब्रॉल खेले कभी। हाँ भाई आगम भाई, पक्का पक्का। यार मेरी सुपर चैट नहीं आती ना, तुम लोग बस बकवास करते रहते हो। तेरे लाइव देखने के लिए भी 2 अनस्किपेबल एड्स देखनी पड़ेगी क्या? अरे नहीं यार, आपके लिए नहीं आएंगी अब अंकुर भाई, आपके लिए एड्स नहीं आएंगी। बट नहीं यार, आज ना मैं कैंसिल हो जाऊंगा यार। गया क्या मेरा स्ट्रीम? फक, मेरा स्ट्रीम गया क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं गया। हाँ सही है सही है सही है सही है। कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्ट। मैं अपनी स्ट्रीम को देख नहीं पा रहा था एक्चुअली यूट्यूब पे, इसलिए थोड़ी बीटी हुई। मेरे को लगा फक भाई। हाँ 15K, ओह वीर ऑन 15K, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे आपका ब्रेकअप हो रहा है, सब सही है, सॉर्टेड है। अब एज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नॉट मुस्लिम मैन, आई थिंक मुस्लिम मैन हैव दैट एडवांटेज। भाई घूसा मार के ब्रेकअप चलेगा। जैसे बंदी पटाने के लिए कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप जाओ, 4 लड़के आएंगे बंदी को छेड़ेंगे, आप जाके उनसे लड़ते हो। मेरे को लगता है एक ब्रेकअप के लिए भी होना चाहिए। 4 लड़के आ रहे हैं, वो आपको घेर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, और आपकी बंदी कुछ नहीं कर रही, तो उस चीज को आप यूज करो और बोलो माजदा। अथार कह रहे अर्पित को तलाक। सॉरी भाई कुरैशी भाई, यार आप गुस्सा मत हो जा रहा भाई यार। शिट भाई कुरैशी भाई, आप गुस्सा हो गए यार, गुस्सा मत होना। बट हाँ, एक होना चाहिए ऐसा कॉन्सेप्ट, जब ब्रेकअप कर रहे हो तो 4 लड़के वही फिर से आए, और इस बार इस बंदी के दिमाग में आएगा ये लोग फिर से आए हैं, ये इनका रिडेम्पशन आर्क है क्या? फिर वो लड़की बस देख रही है अब उसे क्या करना है। अगर उस मोमेंट पे वो लड़ने लग जाती है तो आप ग्रीन सिग्नल दे दो अपने दोस्तों को, आप भी मारो बहनचो, बहन की लोड़ी लड़ाई में कुछ। फिर वो बोली मुझे क्यों मार रहे हो? बेब आप ऐसे नहीं आ सकते लड़ाई के बीच में, आप ऐसे नहीं आ सकते। थैंक यू भाई स्मोक भाई मैंने एक लड़की को लव लेटर में उसके पिंक बेस पे पोएम लिख दी, उस कुतिया ने नेक्स्ट डे बैग चेंज कर दिया। अब मैं रोज वो और उसके बॉयफ्रेंड को अपने डिपार्टमेंट के सामने बातें करते हैं। भाई कुछ एडवाइस दे। आर्यन भाई मैं क्या बोलूँ भाई, ये तो समझ सकता हूँ मैं, बट यही होता है ना जब औरत को पता चल जाता है कि आपके ऊपर उसका क्रश है एंड शी इज लाइक इन रिलेशनशिप, तो एक स्क्रूटनी होती है आपके ऊपर। आप कुछ भी कर लो, आपके साथ में उल्टी सीधी हरकतें ही होंगी। तो आई वुड से कि इस मोमेंट पे आप कुछ कर नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी इज डेटिंग समवन एल्स। प्रीवियस वीडियो डिलीटेड नहीं भाई है। How to break up with a psychopath man over 30 without making him angry? Run. Change your identity, change your phone number, Aadhaar card, everything. Just run. Settle down with a nice young man in the mountains. Just run. Can a boy and a girl just be friends? I guess so. डिपेंड करता है कि कौन अगली है।
मतलब नहीं भाई, मतलब I've seen pretty people being friends like of the opposite gender. I think it can happen, but there is some amount of sexual tension every time they're alone. They are, if they both know that they're pretty, there will be some amount of sexual tension in their room whenever they're alone. बट हाँ, फ्रेंडशिप हो सकती है, सेक्सुअल टेंशन के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मेरी और पापा की फ्रेंडशिप देख लो यार, कम ऑन भाई। मेरे को मिली रिजेक्शन, अब होगी जिम रीमा की। बिल्कुल भाई। व्हाट इफ एनी गोल्ड डिगर कम्स इन टच? देखो, मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूं, ब्रेकअप करना इज एन आर्ट। तो अगर आप इस चीज को स्किल वाइज नहीं देखोगे ना, तो फिर आप चूती हो, समझ रहे हो? एंड सपोज करो कि आपका ब्रेकअप, कैन अ सिचुएशनशिप एवर वर्क? नहीं। देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर इन अ सिचुएशनशिप, मैम। देयर इज अ रीजन, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रायोरिटी। सिंपल इज दैट। नाउ इट माइट फकिंग हर्ट you, but that's the truth. That's the God honest truth. You're in a situationship because the guy does not deem you worthy of being in a relationship with. मम्मी पापा का ब्रेकअप कैसे करवाऊं? बहुत टॉक्सिक है। आपने बताओ क्या करना है। डिनर चल रहा है, ऑफ कोर्स कभी कभार होता है कि मम्मी और पापा के बीच में हल्के सा टेंशन होता है, तो मम्मी कुछ उल्टा सीधा कर दिया और पापा ने कुछ बोला ना, उस बेइज्जती में एडअप किया करो, एडलिब्स, मीगोस की तरह। पापा ने कुछ बेइज्जती मारी, हाँ भाई ये तो है ही मामो, ऐसी चीजें किया करो। आजकल सुपर चैट बहुत मिल रही है, कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू भाई। और एक वुल्फ का साइन बेड़िया बना दिया मुझे, बट ये लो एड्स। और फिर बताऊं क्या होगा, जैसे आपने पापा के साथ में ये किया, वंश कह रहा हाउ आर यू भाई, बहुत बढ़िया भाई। जैसे आपने पापा के साथ में किया, अब आपने पापा के एस्टेब्लिश तो कर दिया कि आप पापा की साइड हो। अब आपने क्या करना है, मम्मी के साइड आना है, ठीक है? मम्मी तो पूरे टाइम यही करेंगी, मेरे इस घर में तो कोई सगा नहीं है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है इस घर में, मेरे घर में बस ये सिम्बा है मेरा, बाकी सारे खराब है। उस मोमेंट पे आपको इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। भाई कनाडा में फूसी गैंग इवेंट कब? जब भाई भप्पा भाई का वीज़ा इशू हटेगा बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक टेररिज्म एलिगेशंस। बट हाँ, अब आपको अपनी मम्मी को थोड़ा सा फंसाना है। आपको अपनी मम्मी को ये बताना है कि भाई मम्मा यार ये सब तो छोड़ो यार, आप क्या यार, आपको कभी नहीं लगता कि आप फंसी हुई हो? ये सब बातें बोलोगे ना तो एक तनाव बनेगा। बट इंश्योर करो कि ज़्यादा मत करो, फिर ना मम्मी पापा का दोनों को पता चल जाएगा ये लड़का बीच में आग लगा रहा है। वो भी नहीं करना। तो आपने क्या करना है, जब वो बेइज्जती हो रही होती है ना, बस हंसना है जोर जोर से। पापा ने कुछ बेइज्जती करी, जोर से हंसो। फिर मम्मी ने कुछ कहा, फिर पापा ने कुछ कहा। फिर क्या होता है, जब मम्मी अकेले बैठी होती हैं तो मम्मी से पूछो क्या हो गया, फिर मम्मी ना चिल्लाएंगी, बताएंगी, पूरा एक मोनोलॉग आएगा, वो बस सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दैट विल ऑलवेज वर्क, दैट विल ऑलवेज वर्क। ये लो भाई एड, अर्पित भाई की डिवोर्स टिप्स। बट यू कैन नॉट लाइक यू नो, मैं जो भी कह रहा हूँ डिवोर्स एंड एवरीथिंग के बारे में, मैं इन सब के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट इन्वॉल्व इन दिस शिट। मम्मी का टेक्स्ट आया, कह रही हाँ सुन रही हूँ मैं, तू क्या कर रहा है? शिट शिट, रुक जाओ यार एक मिनट। अरे यार सुनाई दे जाता उन्हें यार, देख नहीं रही हैं वो। छोड़ो, और क्या बोलूं मैं, छोड़ो, छठो भाई। इन सब चीज़ों में तो, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी भाई, इन सब में क्या है, ये सब तो रोज का है भाई। कॉल आंटी ऑन स्ट्रीम नहीं भाई। I'd like to like you know, I'd like to keep my family out of my career because ये सब चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। नहीं भाई, मैं बाद में बात करूँगा।
मम्मी स्ट्रीम, ये सब रिशु से बोलना, मेरे से मत बोलो। हाँ छोड़ो, इसके बारे में छोड़ो भाई, और कुछ बात करते हैं। शो द मैसेज, नहीं यार नहीं डाल सकता। छोड़ो भाई, और कुछ पूछो भाई। स्ट्रीम बंद कर गूगल, नानी की कसम। यार सुपर चैट नहीं आ रही ना, दिस शिट इज फकिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओमेगल नहीं भाई, ब्रेकअप्स के बारे में पूछो भाई, कैसे क्या करूं ब्रेकअप में एंड एवरीथिंग, क्या करें। स्टोरी टाइम, चलो एक स्टोरी टाइम बताता हूँ ब्रेकअप के बारे में मैं आपको, ठीक है। आई वुड से दिस ब्रेकअप वॉज द बेस्ट ब्रेकअप दैट आई एवर हैड। सबसे बढ़िया ब्रेकअप। मैं आई वॉज इन्वॉल्व इन सर्टन सिचुएशनशिप वेयर supposedly I was in a relationship and I came to college and I started hooking up with a girl, ठीक है, side by side. Now I would say this thing taught me a lot about, like, you know, relationships and the value of one. I would say both of these women were really, like, you know, great persons, great women. They had everything, but the thing was I did not have the balls to tell someone back home कि भाई सुन, हमारा जो भी था वो अब ख़त्म हो चुका है. I'm sort of like, you know, I'm single, I'm trying to do someone else right now. And you know why? Because the rush of having, like, you know, two women at the same time was just too much for me. I was like, I want to live this moment for the next 5 years. But the thing was, मम्मी ने Spotify रैप दे दिया एडलिप्स बट हाँ उस पर आते हैं भाई, स्टोरी पे. बट द थिंग वॉज कि जो कॉलेज में जो मेरी बंदी थी, शी केम टू नो अबाउट दिस, अबाउट माई गर्ल बैक होम, एंड शी वॉज लाइक कि what are we then? I was like, I'm trying to break up with her, I'm trying to break up with her, I will break up with her. And bro, एंड में क्या हुआ कि ट्रेन हाथ से छूट गई. एंड जो कॉलेज वाली थी, शी वॉज लाइक, ना, I'm not going to be in this thing, I'm not your fucking toy. And she left me. And उस गिल्ट ने मेरे को फिर मजबूर कर दिया कि मेरे को रियलाइज़ करवाया कि मैंने क्या बकचोदी करी. एंड देन आई हैड टू टेक्स्ट माई गर्ल बैक होम, आई हैड टू टेल हर कि ना, we're not a thing anymore. We're not a thing anymore because I'm trying to work on myself, and this long distance is not going to work. चिराग कह रहा भाई चुप कर जा. क्यों भाई, आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आती? आपको अगर हिंदी में सुननी है तो आप मेरे पास DMs में आ जाना, मैं आपको पूरा हिंदी में समझा दूंगा. हज़ार भाई थैंक यू. सर्वेश कह रहे रुक भाई, सॉरी भाई. कैसनोवा तो नहीं भाई, आई वुडंट कॉल इट कैसनोवा, बिकॉज लाइक कैसनोवा मतलब वो गेम वाली शिट होती है ना, गेम नहीं था. फॉर मी आई वॉज जस्ट लाइक पीट डेविडसनिंग माई वे इन टू सम फकिंग विमेन. I was like that funny guy and everything, but it takes a lot of effort, bro. Long distance, my girl accepted a proposal, was crying and saying sorry to me that she will say no to him, but I broke up with her. Did I do good? Yes. In a long distance, if you come to know that they're fucking, like, you know, being involved with someone else, it's the best thing to say no, because it just shows. क्योंकि ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, there are some kind of people that need physical contact, and there are some kind of people, I would say a fraction of the population, that can do well with being like long distance and दूर से and everything. But majority लोग को physical interaction बहुत अच्छा लगता है, कि अगर कोई सामने आस पास हो, मुंह पे ऐसे बात कर रहा हूँ, like you can judge their face and everything. There is something about that, like, you know, face to face interaction जो voice call या video call में नहीं हो पाता. तो अगर आपका long distance में relationship breakup करने का वो हो रहा है तो it's okay. लोग मेरे को बोल रहे हैं misogynist कैसे? I realized कि I fucked up. At that moment I was feeling like I'm the man homie. But उस चीज़ को चेज करते करते I just realized कि मतलब I was treating both the women बहुत बुरी तरीके से. I apologized to the girl in college अच्छे तरीके से, like, you know, I came to terms with her बहुत अच्छे तरीके से. I fucking apologized to her because she was really nice, and plus she's now a fucking model, so I have to fucking always see her face in like Satya Paul
लाइक सब्यसाची और इन सब चीज़ों में, तो मैं मेरी देख के जो गांड खिलचती है ना बहनचोद की, फक फक फक, सोना खो दिया भाई. हाउ टू ब्रेक अप विद गुजर गर्ल. आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर वाले करवा देंगे अगर आप दूसरी कास्ट के हो तो. डिजर्विंग, या डिजर्विंग तो था. आई डिड नॉट ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट ब्रो. आई शुड हैव. डू यू लिसन टू किंग? हाँ भाई. Should I break up with a guy who's good in bed? I mean, you don't need to fucking be like, you know, have a thing with a guy who's just like. I remember एक बंदी थी, उससे मतलब मेरी दोस्त थी, वो मेरे को बताती थी कि भाई वो बंदी बस एक बंदे से इसलिए अट्रैक्टेड थी क्योंकि उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ था, और वो जो सामने वाला जो दूसरा बंदा रिबाउंड पे आया था उसका, ही वॉज रियली गर्थी. ठीक है, ही वॉज रियली गर्थी. ही वॉज नॉट लॉन्ग, ही वॉज नॉट टॉल बट ही वॉज लाइक रियली thick in a place where it matters. But the thing is कि she did not want to like, मतलब मैं ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ यार, कम्युनिटी गाइडलाइंस वाइड वो मैं कैसे समझाऊँ. एक होता है ऐसे, भाई साहब थे ऐसे पर थोड़ा छोटा ऐसे, बट ही वाज लाइक, इट्स लाइक he would not hurt her throat but he can give her a mouthful. समझ रहे हो? Yeah, and women love that. I don't know why. What he was packing, yes. उसकी पॉकेट आगे की तरफ थी और 2 वॉलेट थे बेसिकली. एंड नाउ द थिंग वाज कि नाउ दिस वुमन शी वाज लाइक कि ब्रो, आई जस्ट वांट हिम फॉर दिस, एंड नथिंग एल्स. एंड आई वाज जस्ट लाइक हाउ लकी इज दिस गाय. हेलो. हाँ 119 रुपये पेटीएम में. बताना 119 है. एक बार भेजो, यहाँ पर ये खुले पैसे नहीं हो रहे. ये और भेज रहा हूँ, रुक. QR चलो. मेरे नंबर पे कर दे. हाँ इसी पे.
Looking good. Oh yeah, good one.
क्योंकि एंड यू नो व्हाट दिस गाय डिड, व्हाई कांट बी अ थिंग, व्हाई कांट वी बी अ थिंग ब्रो? भगवान का दिया गया सब कुछ है तेरे पास, गर्थ है, हाइट है, and now you're fucking letting all of this go because you have attachment issues. Like I said, bro, agar if you're good in bed and everything, it's better that you just stick it to that. It's best like you relationship mein na hai. But I will say this, if you're good in bed, especially if you're a woman, 80% chance is ki the guy would never break up with you. They would never break up with you. 80% chance. They're like, भाई बंदी क्रैक है, एंड बंदी क्रैक है, प्रॉब्लम आती है, क्या निकलता है, बंदी क्रैक है. एंड देन लाइक यू नो वन डे देयर फ्रेंड्स लाइक, भाई तू आज बंदा इतना खुश क्यों है भाई, क्या हो गया भाई, तू आज मिल के आया क्या? बोलता हाँ भाई, भाई क्या हो गया भाई, और उसके मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, भाई बंदी क्रैक है. समझ रहे हो? तो फिर गुड इन बेड, आई थिंक अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स कैन लाइक यू नो स्मूथन ऑफ. ऐसे नहीं जाते. हाँ, ये लो भाई एड. Can you do a freestyle on bandi crack, bandi breakups? नहीं भाई. I'm a 5-incher. Does size matter? I don't know how this relates to a breakup. इस चीज में क्या स्क्रिप्ट है भाई? मैं तो बस बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ है. हाँ, ब्रेकअप के बारे में पूछो भाई. ब्रेकअप के बारे में मैं सही में कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना इसी रट में रह जाते हैं कि भाई बंदी पटानी है, बट लोग ये भूल जाते हैं पटी हुई बंदी से भागते कैसे हैं. एंड दैट इज द, फिर वही होता है, ब्रेकअप नहीं करते आप, भागते ही हो, फिर अच्छे से ब्रेकअप नहीं कर पाते आप. द बेस्ट थिंग अबाउट अ ब्रेकअप इज तुम किस्मत अपने हाथ में ले रहे हो भाई वापस से. इट्स नो लॉन्गर कि भाई वो हर्ट हो जाएगी, उसको बुरा फील होगा, उसको नहीं. फक दैट, फक दैट. Long distance. The girl had commitment issues but cheated by accepting someone else's proposal. She always cried long distance will work. What type was she? She was, I would say she was the type of person who needs like, you know, physical interaction. Now, I'm not going to call her names ki like, you know, she did not stand up to her promises and everything. Nah, some people are built like that, bro. And they think, a lot of people think कि हाँ भाई long distance काम कर जाएगा, करते रहते हैं, and एक point पे आता है कि they just fucking give up, bro. And it's very normal. It's very normal. And it's great that you broke up with her, भाई. इसमें गलती किसी की नहीं है. आज सीरियस कैसे हो रहा भाई? इससे पहले मैं बहुत जोक्स मार चुका हूं भाई. आई लव यू कब बोलना चाहिए? ब्रेकअप के जस्ट बाद. See, I know that things are not working out. And it's better that we like, you know, end it right here, क्योंकि आगे जाके और खराब होगा. But the thing is, I still love you. But that's all, I still love you. जिससे बताऊं क्या? उस बंदी को रिबाउंड करने में दिक्कत है. उस बंदी को रिबाउंड करने में दिक्कत है. Because if you hear that just after a breakup, that shit fucks you up, bhai. That shit fucks you up. So if you have some shit like, you know, कि इस बंदी की गांड मारनी, इस बंदे की गांड मारनी है, do that. भाई मेरी एक एक्स थी स्कूल वाली, उसने बताओ क्या ब्रेकअप के जस्ट बाद मुझे बोला था, बताओ क्या बोला था? अर्पित, आई प्रॉमिस यू आई विल बी बैक. भाई मेरी अगली 4 रिलेशनशिप्स खराब हो गई भाई, बनते बनते खराब हो गई. बिकॉज आई वाज लाइक नहीं भाई, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आएगी. But I'm telling you, bro, this shit works. It's like the cherry on top. आप ब्रेकअप कर भी लेते हो, आप किसी और के साथ भी हो जाते हो, और आपको वो भी नहीं देखना पड़ता कि आपका एक्स किसी और के साथ है. It's the best thing.
वर्कड ऑन बाला. यस, आई एम स्पीकिंग थ्रू एक्सपीरियंस. ये मेरे साथ हो चुका है. डब्लू गर्ल. ये लो भाई, तुम बहुत बोल रहे हो ना डब्लू गर्ल, मेरी एक्स की साइड ले रहे हो ना. ये लो ऐड. मैं तुम्हारे को ना एक बात बताता हूँ भाई अपने एक्स के बारे में. भाई अभी ना अन्वेषणा पे 500K होने वाले हैं. अच्छी जा रही है भाई. एक दिन ना मेरी एक्स का मेरे को टेक्स्ट आया, कहती यार अर्पित भाई मैंने तेरी ईपी सुनी यार, मैं तेरे से इतना प्यार नहीं करती थी. भाई एंड आई वाज जस्ट लाइक कि भाई कुछ बोलेगी कि इट वाज रियली नाइस, इट मीन्स अ लॉट. उसने वो सब कुछ बोला बट उसके बाद बोलती बट आई डोंट नो अर्पित, आई डिड नॉट लव यू दिस मच. ये क्या है? Hey, 500K on अन्वेषणा. भाई. And at that moment I was not even mad. I was not even mad. उस एक स्टेटमेंट ने ना मेरा सब कुछ ऐसे उड़ा दिया. हाँ भाई, it was just a fucking phase of my life. And the only thing was that was holding me back was कि मैं बहुत टाइम तक उसको ऐसे पोजीशन की तरह ही देख रहा था कि भाई वो वापस आएगी, she's mine and everything. But then I fucking realized, nah. Let that bitch go. Let that bitch go. तो वही मैं कहूँगा, अगर आपको ब्रेकअप करना है पहले आपको ये एक्सेप्टेंस बना के रखनी है. लेट दैट वुमन गो. लेट दैट वुमन गो. क्योंकि ना भाई यही सब करते हैं भाई लड़के. क्या करते हैं रिलेशनशिप में, मतलब वो ब्रेकअप कर लेते हैं और उसके बाद भाई 2 महीने बाद भाई सही में बोलूँगा यार, सुने ना भाई आज तेरे को बहुत मिस कर रहा था यार. बताओ क्या होता है जब आप ब्रेकअप करते हो ना, आपके पास एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ पावर आती है जब आप ब्रेकअप करते हो. एंड मैं कह रहा हूँ ऑल पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. और ये वाली जो पावर होती है ना, ये भी करप्ट होती है. ये आपका दिमाग खा जाती है. डू अ फ्री स्टाइल ऑन ब्रंदी क्रैक है भाई. फ्री स्टाइल नहीं, इस पर तो गाना ही लिखा हुआ है मैंने, बाद में सुनाऊंगा कभी. बट आई वुड से कि सपोज करो आपने ब्रेकअप किया है, इंश्योर करो कि वो पावर आपके पास ही रहे. डोंट फकिंग थिंक कि भाई मैंने ब्रेकअप कर दिया, नाउ आई मिस हर, ये वो ना. डोंट डू दैट. नेवर डू दैट. नेवर एवर डू दैट. एज अ वुमन ऑल्सो, एज अ मैन ऑल्सो. बिकॉज आप जब ये करते हो ना, आप ये बोलते हो कि आई मिस यू एंड एवरीथिंग, ये वो, सामने से कोई भी बंदा ऐसे नहीं सोचता भाई कि ठीक है यार, आई इट्स ओके यार, हो जाता है. अगर वो ऐसा सोच रहा है वो भी चूती है, उसमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. और अगर आप ये करें, आप में तो बिल्कुल नहीं है. घटिया घटिया नीच. ब्रेकअप करने के बाद कौन करता है भाई? स्टिक टू योर वर्ड. एड. बिकॉज मेरे को सुपर चैट नहीं आई. चावी इन द हाउस भाई. चावी कौन है भाई? लो भाई ऐड दे दी. लड़की से बात कैसे करना चाहिए भाई? लड़की से ऐसे बात करो कि जैसे वो, क्या सही बताऊं ना, एक ना टाइप ऑफ एक अदा होती है लड़कियों से बात करने की. यू कैन नॉट बी टू ब्रैश, टू क्रूड विद विमेन, एंड यू कैन नॉट बी टू ऐसे हाँ जी ये ना. तो आई ऑलवेज टॉक टू विमेन जैसे मैं ऐसे एक्ट करता हूं कि मतलब मेरा कोई दोस्त है, उससे मैं 4 साल से नहीं मिला. हमेशा 4 साल से मैं अपने एक दोस्त से नहीं मिला हूं. वो कनाडा रहता था, वो वापस आया है. अब मैं उससे कैसे बात करूंगा? मैं ऐसे बात करता हूं लड़कियों से हमेशा. हर ओकेजनली पूछता रहता हूं उससे हर 5 मिनट में, ये वीजा वीजा कैसे लगता है? अच्छा ओके ओके. मतलब तुम जब वहां पे गए थे बाहर, कहाँ तुम मतलब जॉब्स करे थे मैकडोनल्ड्स में? एवरीथिंग. शील ऑलवेज बी लाइक कि ये क्या बोल रहा है, बट शील ऑलवेज थिंक कि भाई हाँ ये बंदा इंटरेस्टिंग है. क्या एक्स पे ईपी बनाना वर्थ इट है? अभी मैंने बताया तो क्या हुआ.
ये फर्स्ट कॉपी नहीं है भाई, ये तुम्हारा को पता है मैं 11th में था, मैंने बस पापा से बोला था पापा ये जर्सी वाली जैकेट चाहिए मेरे को, पापा 2 लेकर आए थे, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड की और एक ये बार्सिलोना वाली, एक जॉय की थी एक मेरी थी, अभी तक चल रही है। लाइक दिस हाउ टू मेंटली फक हर। सी दिस इज अ वेरी रॉन्ग एडवाइस बट व्हाई डू यू वांट टू मेंटली फक हर? ऐसा क्या किया उसने, ऐसे मत किया करो भाई। बट अगर आपको सेल्फ डिफेंस में मेंटली फक करना है किसी औरत को तो मैं बोल सकता हूँ, अगर आपको सेल्फ डिफेंस में करना है, आपके साथ में हो रहा है बहुत टाइम से इमोशनल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, तो अब आपको क्या करना चाहिए? डोंट यूज ब्रेकअप एज अ क्रच फर्स्ट, ठीक है? बिकॉज इफ शी नोज कि आप ब्रेकअप को यूज कर रहे हो एज अ क्रच जस्ट टू फक विद हर माइंड, एक पॉइंट आएगा बोलेगा हाँ ठीक है जा जा, एंड देन आधे लड़कों के पास कुछ होता ही नहीं बहन, तब मैं क्या बोलूं, है ना? मैं क्या बोलूं? मैं वही कहूंगा, आपको एक औरत को सही में फकअप करना है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ज्यादा स्टार्ट कर दिया करो, बहुत ज्यादा कर दिया करो। अगर आप बहुत इंट्रोवर्टेड हो तो बहुत ज्यादा बाहर जाया करो, इधर उधर किया करो, है ना, चीजें और किया करो। उस औरत को लगेगा फक यार ये बंदा क्या कर रहा है, क्या हो क्या गया इसे, जैसे मैं सोचती हूं ये वैसा क्यों नहीं है। उसकी चिक चिक सुनना बंद कर दिया करो। एक पॉइंट आएगा भाई वो बंदे सोचे कि फक भाई ये क्यों हो गया, ये बदल क्यों रहा है। विमेन हेट चेंज, दे डू। तभी ना मैं जब भी किसी बंदी के साथ रिलेशनशिप में जाता हूं ना, दूसरे दिन पे मैं अपने बाल पूरे उड़वा लेता हूं और फिर मैं देखता हूं कि वो क्या करेगी, बिकॉज नाउ दैट इज हर नॉर्मल। हाँ ये तो गंजा ही है। तो अब अगर मेरे बाल लंबे भी हो रहे हैं या फिर मैं हेयरलाइन छुपा भी रहा हूं, शी इज लाइक कि हाँ दिस इज ठीक है, मैं क्या ही करूं, ही इज चेंज्ड। स्टॉप टॉकिंग अबाउट बिचेस ब्रो। क्यों भाई, लेफ्ट आउट फील होता है आपको? यार कोड भाई के सारे गाने तो बहनचोद डिलीट ही हो गए हैं यार, मैं क्या बोलूं अब। मेरी सुपर चैट का है यहाँ है भाई मेरी सुपर चैट। ओशन इन द हाउस मैन, वी वर मिसिंग यू ओशन यार, वी वर मिसिंग यू। I broke up with her, but she isn't leaving me, still annoys me a lot. What do I do? Block her. उसकी मम्मी को कॉल कर दो। सिंपली बता रहा हूँ भाई, सिंपली भाई मैं बताता हूँ भाई, ये चीज़ ना पप्पा के साथ हुई थी भाई। ओ माई फकिंग गॉड, इट ऑलवेज वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स। भाई पप्पा ने एक बंदी के साथ किया भाई ब्रेकअप, भाई बंदी इतनी क्रैक, पप्पा की मम्मी को टेक्स्ट करती, I hope your son dies. He has achieved nothing in life. He's a loser. अगर आप सुधारना चाहते हो सुधार लो अपने लड़के को। एट दैट टाइम मेरे दिमाग में आया भाई पप्पा सही में खेल गया भाई। टू मेक अ वुमन स्टूप डाउन सो लो, पप्पा has that girthy dick man. He has that girthy thick dick to make a woman so crazy, so fucking crazy man. ले पैसे ले, हाँ भाई। बट ये होता है, अगर आपको कोई बंदी बहुत तंग कर रही है, आपके साथ में फालतू में ब्रेकअप कर दिया, उसकी मम्मी को कॉल कर दो, उसके भाई को कॉल कर दो, मेरे को नहीं पसंद आया, आपकी बेटी बहुत गंदी है, शिकायत। आपने अपनी साइड से तो कर दी ना, अब वो कैसे सोचें कि तू होता कौन है, तुम्हारे को 2 गालियां, ब्लॉक कर दो उनका नंबर, बट बता दो कि आपकी बेटी ने ये मेरे साथ किया और मुझे अच्छा नहीं लगा, बस सिंपल। पर भाई पप्पा, आंटी ने जो पप्पा की उस दिन क्लास लगाई ना, कहती तू क्या करके आया है, प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, ये क्या किया है तूने। और भाई मैं था भाई, बप्पा की प्रिवेसी, माँ चुदा है बप्पा की प्रिवेसी यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट बप्पा का गोल्ड मेडल है भाई इस चीज में। अगर मैं चीज बोलता हूँ ना कि कोई चीज मैं आज तक कुछ भी अचीव कर लूंगा, मैं कभी ये चीज अचीव नहीं कर पाया हूँ भाई कि कोई बंदी आके मेरी मम्मी को सुना रही है कि मैंने इतना बढ़िया ब्रेकअप किया है। दैट्स द गोल इन लाइफ भाई, दैट्स द फकिंग गोल इन लाइफ। ब्रो शी चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर मी, सो अनोइंग। Bro, you're not dealing with a woman anymore, you're dealing with a stalker.
And the only way to deal with a fucking stalker is to cope. I'm telling you bro, I'm telling you. There is, सही में बोल रहा हूँ भाई, इंडियन लॉ में ना एक बहुत बड़ा लैक्यूना है फीमेल स्टॉकर्स के रिगार्डिंग. मेल स्टॉकर्स के लिए बहुत सारे लॉज आ जाते हैं भाई, ये वो, पर फीमेल स्टॉकर्स का भाई बहुत मुश्किल है भाई डील करना. एंड द ओनली वे टू डील विद इट इज जस्ट टू फकिंग कोप भाई, इज जस्ट टू फकिंग कोप. जाट एबिलिटी, बिल्कुल भाई, जाट एबिलिटी भाई. ही हैज दैट भाई, सही में कह रहा हूँ, बप्पा हैज अ सुपर पावर एंड दैट्स हिज सरनेम. पाँच 500 वॉचिंग तो मतलब इसमें कुछ हंसी की बात है या फिर क्या है? मतलब मेरे, आई एम ग्रेटफुल भाई, 500 वॉचिंग, हाँ भाई अच्छी बात है. How to move on from the mental breakdown of the time waste and mental pain that girl has caused. I don't care about her love and just the time and mental breakdown. See, really nice, bro. First of all, I would like to say that you know what you want to fucking not think about, and that's a very good thing. You have recognized कि कौन सा thought तुम्हारे को bother कर रहा है, and that is कि जो तुमने time दिया था और वो सारी जो यादें वापस आती हैं. तो उस चीज़ को समझ जाओ कि मतलब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आएगा. यू हैव टू पर्पसली मेक अ फकिंग डिसीजन दिमाग में कि नहीं भाई इसके बारे में नहीं सोचना. सिंपल एज दैट. अब हो गया जो हो गया था, बस खत्म. पहली चीज़ जो आपको करनी है कि ऐसी औरत को विलेनाइज नहीं करना. विलेनाइजिंग ये होता है ना कि ये तो औरत ऐसी थी, नेम कॉलिंग एंड एवरीथिंग. इट हेल्प्स टू अ सर्टन डिग्री. 2-3 घंटे के लिए यू कैन कॉल हर एंड एवरीथिंग. ये सब बकचोदी कर दी, बोल दिया अपने आप से ये तो ऐसे टाइप की औरत थी है वो. बट दैट डजंट हेल्प इन लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपको भी पता है भाई कि उसने ऐसा क्यों किया. फिर आप चाहे कितनी गाली दे दो, क्या कर लो, आपको पता है कि उसने ऐसा क्यों किया. तो आप नहीं बोल पाओगे ज़्यादा दिनों तक. How to talk to her after she has blocked me? I think you were talking too much, bro. You just need to take a rest, like, you know, think about some things. Figure out your fucking shit. भाई मेरी तरफ से एक ऐसी भाई, थैंक यू भाई आशीष भाई. यार एक बंदा है ये FBI साड़ी करके, ये ना बंदा मेरे को ना बहुत ट्रोल करने की कोशिश करता है. ये है बंदा FBI साड़ी. आप जाके ना एक बार इसका कंटेंट देखना, ठीक है? आप जाके इसका एक बारी कंटेंट देखना. मैं कुछ नहीं बोलूँगा और मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप जाके इसका कंटेंट देखो. आई कांट से एनीथिंग एल्स ब्रो. ऐसे लोग क्यों आ रहे मेरी लाइफ पे? दैट्स द प्रॉब्लम ब्रो. कुछ मत करना और मैं बस बोल रहा हूँ जाके बस देखो, दैट्स ऑल. मेरी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है. किस चीज़ से भाई? हाउ टू गेट फ्री जेम्स इन COC? अब कितनाई घटिया क्वेश्चन एकदम. मेरी सुपर चैट कहाँ है भाई? सुपर चैट दो भाई. आई वांट माय फकिंग सुपर चैट ब्रो. दिस शिट इज स्टूपिड. कौन सा PC भाई? है बस एक PC बन गया बस. मैं सोच रहा हूँ ना एक रेडिट पे एक रेडिट बना दो भाई, मेरा सब रेडिट, अगर कोई बना सकता है तो. फिर वहाँ पे ना तुम लोग ऐसी चीज़ें जो भी क्वेरीज हैं, अगर तुम्हारे को कोई ऐसा ओपिनियन चाहिए, मेरा ओपिनियन चाहिए उस चीज़ पे, एडवाइस तो नहीं बोलूँगा, ओपिनियन चाहिए, तो मैं दूंगा उस पर अनसॉलिसिटेड, बिना पैसे दिए. अगर कोई रेडिट पे ये सब कर सकता है तो करना भाई. आई वुड लव टू फकिंग रिस्पॉन्ड टू लाइक यू नो ऐसी चीज़ें जिसको दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग. ब्रो वांना बी श्वेताब गैंगवार. हाँ भाई बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट आई एम एस्पायरिंग टू बी राइट नाउ. श्वेताब गैंगवार, बिल्कुल सही कह रहा भाई. यू एक्चुअली लाइक यू नो, तूने वो नस पकड़ ली भाई मेरी. बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम एस्पायरिंग टू बी ब्रो. मेरे को एक किताब लिखनी है. जीभ निकाल के हाथ ऊपर करो, स्मेल आएगी.
um, uh, अगर एक्स फ्रेंड सेम फ्रेंड ग्रुप में है तो क्या करे भाई? पहली चीज ये चीज ना पेट्रीस ओनील ने बहुत अच्छी बोली थी। उसके दोस्त हैं और वो रिलेशनशिप तक चलते हैं। जैसी वो रिलेशनशिप खत्म हुई उसके दोस्त हैं। समझ रहे हो? You have to prioritize yourself. Certain relationships also go with certain relationships. गई बंदी अपने साथ में 3-4 लोगों को लेकर गई। ग्रेट, गुड, इट्स बेटर। मत किया करो कि भैंचो तब दोस्तियां चल ऑकवर्ड हो रही है भाई, हम लोगों का 5-6 लोगों का ग्रुप था उसमें वो योर फकिंग फॉल्ट। यू मेड दैट डिसीजन भाई, यू मेड दैट डिसीजन। I think r/Google would be nice. r/Google अर्पित बाला सही रखता। टू का टूर भाई कुछ नहीं है भाई, बस एक कंप्यूटर है बस। भाई रुको, मैं ना मुत्ती मार के आया। Yes, sir. Mutti time. Yes, sir. How to get rid of extremely emo girl? Please help me. अगर भाई कोई बंदी बहुत ज़्यादा, भाई मेरे को ना बहुत बिल्कुल नहीं पसंद वो जो एक होती हैं औरतें बहन जो ऐसे टाइप की होती हैं ना, देर सैड बिकॉज देर जस्ट सैड। एक होती हैं औरतें ट्राइंग टू बी सैड। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? उनकी जिंदगी में इतना प्रिविलेज है कि उनको लगता है मैसेज डिलीटेड बाय अर्पित बाला। आई नेवर डिलीटेड दिस ब्रो, आई फकिंग वांटेड टू अनपिन दिस मैसेज। मैं क्या कह रहा था? हाँ, उनकी जिंदगी में इतना प्रिविलेज होता है, इतना ज्यादा प्रिविलेज होता है कि उनको लगता है कि अगर मैं सैड होंगी तो आई विल बी मच मोर हैप्पियर। इट गिव्स देम लाइक अ सेंस ऑफ पर्सनैलिटी। Being sad is my go-to shit. And they have absolutely nothing to be sad about. Absolutely nothing to be sad about. उनसे तुम नॉर्मल डेज पे बात करो, हाँ भाई बहुत बढ़िया, और जैसी बहन उनके साथ में बंद कमरे में बैठे हो, sometimes I just feel like, you know, नहीं बहन, नहीं मैं खुश हूं। मैं तो ऐसे ही रखता हूं भाई। अगर कोई बंदी बहन जो मेरे सामने आके भाई मूड खराब करने की कोशिश करती है ना, मैं कंपटीशन की तरह लेता हूं। अब हंसेंगे और हंसेंगे। हाँ, हम तो ऐसे ही है। हाँ भाई सुपर चैट आ नहीं रही, आ गई। अच्छा, हाउ टू डील विद लोनलीनेस वाइल परस्यूइंग करियर। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना इसने। हाउ टू डील विद लोनलीनेस वाइल परस्यूइंग करियर। ओमेगल इन्वेस्ट इन अ फकिंग लैपटॉप पीसी। अच्छा माइक, कैमरा, ओमेगल। ये लो भाई ऐड। भाई एक बार बंदी फैट एस वाला रैप कर दे यार मैं मेहनत मत करो, गा वो रखा ही है, मेरे को ऐसे गाना अच्छा नहीं लगता।
बट नहीं, अनआयरॉनिकली अगर स्पीकिंग, इफ यूर, भाई सही बताऊँ, इफ यूर इन अ प्लेस वेयर यू हैव टू डू इट एवरीथिंग खुद से, जहाँ पे अकेले रहना बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सपोज करो वॉचमैन की नौकरी हो गई, जहाँ पे आपको पता है कि मतलब वॉचमैन हो गया, या फिर मतलब कोई आपको मतलब पार्किंग लॉट में आपको गाड़ियाँ वाड़ियाँ, आपको अकेले रहना है ज़्यादा आपके करियर में, तो आई विल हमेशा ना ऑलवेज बी ड्रिवन बाय गोल्स, कि आज आपको दिन की इतनी रीलें देखनी है तो देखनी है, दिन काटना है भाई। फिर ना आप ट्राई करो, आप इंस्टाग्राम पे हो, जिस बंदी ने रील बनाई है कुछ भी, हाय हेलो हे, एक्चुअली आई एम अ 30-year-old मैन परसुइंग दिस कोर्स, मेरे पास इतना सारा पैसा है, वुड लव टू टेक यू आउट ऑन अ डिनर, आप कभी भी बताओ कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम अ फोटोग्राफर, मुझे आपकी साइड प्रोफाइल्स चाहिए थी और कुछ एग्जॉटिक कपड़ों में आपकी फोटोज। Never understood loneliness, RR for 16 to 21-year-olds. True bro, true. I feel like if you're crying about fucking loneliness, you're not driven. Of course you have to be lonely, you have to accept that bro, you have to accept it that you're going to be lonely. Is a breakup party worth it? Yes. अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट होता है। उस टाइम पे भाई सारे लड़के खुल के जो आर वर्ड बोलते हैं ना नशे में, और उस टाइम तो लड़कियां भी बोल देती हैं, हाँ भाई कहने दो, अब कहने दो, कोई नहीं भाई कहने दो, क्या ही बोले भाई, आज के दिन बनता है। आई फील लाइक उस दिन आर वर्ड पास मिल जाता है बहुत सारे लोगों को जब उनकी ब्रेकअप पार्टी हो रही होती है। नाउ एम आई सेइंग कि ये होना चाहिए? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिना आर वर्ड बोले अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव एन एडिक्शन and you're just breaking up with a lot of women to use that R word, just to use that R word in a state of when you're inebriated, तभी आप ये कर रहे हो। आपको ब्रेकअप का डर नहीं है, आपको बस R word बोलना है। यार तुम लोग ना बहुत ज्यादा वो कर रहे हो यार। रुको एक मिनट, पुट यूजर इन टाइम आउट, यस। मेरा बेस्ट फ्रेंड अब उसका BFF बन गया, मुझे मेरे दोस्त से जेलस होता है जब